हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। टुडे इज 20th अगस्त 2024। आई होप आप लोगों का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अच्छा जा रहा है। अच्छा जाना चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल में विच इज अ बेसिक फ्री चैनल, उसमें मैंने शेयर किया था। वन और सोशल में भी शेयर किया था। वन ऑफ देम रिलायंस इंफ्राइड इज डूइंग वेरी वेल, रूपा इज डूइंग वेरी वेल, लक्स इंडस्ट्रीज हैव डन वेरी वेल। सो बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे परफॉर्म किए हैं। आपके लिए भी ये अच्छे करेंगे अगर आप अच्छे स्टॉक्स चूज करेंगे, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही चीज होगा। सिमिलरली अच्छे स्टॉक्स के साथ अच्छे फेज में रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। जरूर वही अच्छा स्टॉक ढूंढने के इनिशियल फेज में एक दो तीन बार गलती होता है, जिसलिए सारा रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ये जो डिस्कशन है इट्स मोर ऑन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट। सो ओवरऑल ऑल द इक्विटी मार्केट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हमें देखना पड़ता है ग्लोबल पिक्चर को, और ग्लोबल पिक्चर देख के बहुत कुछ अर्ली समझ में आ सकता है। ये जो चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, लाइन चार्ट मेरे स्क्रीन शेयर हुआ है, दैट इज द S&P 500 और ग्लोबल इक्विटी का मेन बेंचमार्क इंडेक्स है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरे इंडिकेटर्स में आई विल गो इनटू इनवाइट ओनली एंड सिलेक्ट द वर्जन टू SD Rainbow Wave, which is known as B2 Risk Master. So under B2 Risk Master, once selected, I will among the setup, I will choose the Risk Master to see the overall risk of the market. Let me unhide it. So overall risk of the market that I see, that in the overall space and also the India specific space, those remain low. There is nothing red flashing here or even the yellow flashing. So far everything looks all fine and nice and good. So it looks like the bullishness that is continuing is further likely to continue. Do such straight up bullishness बहुत रेयरली सक्सेसफुल होता है। मीन इन अ सेंस वी नीड अ गुड करेक्शन, एक अच्छा डाउ स्ट्रक्चर बनेगा, देन विल हैव अ गुड मूव, तब जाके उस मूव में और स्ट्रेंथ आ जाता है उसमें। बट सो फार देख के जो लग रहा है, द लेवल ऑफ रिस्क इज करेंटली मच मच लोअर। तो हम लोग मेन जो ये है इसको हाइड कर देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू नाउ अप्लाई द SD Rainbow Wave मल्टी एसेट मास्टर। अगर उसको रिस्क मास्टर बोलेंगे तो इसको भी मल्टी एसेट मास्टर बोलते हैं। उसमें आइदर वी कैन चूज इंडेक्स फ्यूचर, हम लोग इंडेक्स फ्यूचर चूज करेंगे, और इंडेक्स फ्यूचर में हमें मौका रहेगा कि कौन सा इंडेक्स चूज करें। तो पहले हम लोग इंटरनेशनल देखेंगे। सो इंटरनेशनली S&P चूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल नीचे S&P, फिर चूज करते हैं चलिए डाउ, फिर चलिए चूज करते हैं नैस्डैक थर्ड इंडेक्स, फोर्थ चलिए चूज करते हैं आफ्टर नैस्डैक, लेट्स चूज रासेल 2000, यूएस का 2000 स्टॉक्स ऑलमोस्ट। सो नाउ आफ्टर दैट लेट्स गो एंड चूज यूरोप का इंडिसेस, उसमें UK 100 मतलब फुटसी लंदन, यूनाइटेड किंगडम का मेन इंडेक्स। उसके बाद आई शुड गो फॉर overall European blue chip index. Then I'll go for Germany, German DAX. Then I'll go for Spanish index, IBEX 35. I'll look at Italy, which is, I think, third biggest economy in Europe, FTSE MIB. Now, after Europe is broadly done, we are going to take a look at China, Hong Kong, and Singapore. So China, next we'll do Hong Kong, and next we are going to do Singapore. तो इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में विद दिस इंडेक्स सेटअप हम लोग पूरा देख पाएंगे। सो लेट मी अनहाइड इट, नीचे आ गया। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इक्विटीज आर राइजिंग। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑन द इक्विटी साइड हमें मिल चुका है। सो दिस इज S&P 500 क्लियरली गोइंग अप, white cross above the main mountain top resistance, this is good,
but size of the candle means the volatility is on the higher side. थोड़ा एक चीज वार्निंग, प्रेफर्ड ट्रेड्स एज पर ट्रेंड दिखा रहा है सेल ब्रेकडाउन एंड सेल रेजिस्टेंस. दिस इज अ वार्निंग कि ये जो टॉप लेवल है यहाँ पे वी कैन सी स्टॉप ओवर एंड स्ट्रगल्स. So be careful on that side and keep the quantity considering this. Secondly, also notice कीजिएगा buy trade win probability in S&P 500 is around 43%. नीचे का जो दिख नहीं रहा है वहां पे हम लोग ला लेंगे SDRSI-X. तो ये दो मिला के क्रिएट होता है 12 फैक्टर फाउंटेन ऑफ गोल्ड 7. सो 12 फैक्टर में अभी देख रहा हूं कि 8 फैक्टर्स आर विद द बुल्स, ओनली 2 फैक्टर्स आर बेरिश while 2 factors are neutral. तो अगर मान लेते हैं कि कितना पोर्शन, अगर इफ यू डिवाइड कितना मुझे मेरा क्वांटिटी करना था, सपोज 100 डिवाइडेड बाय फैक्टर. नाउ ईच फैक्टर आप जितना आपका, सपोज 8 फैक्टर आपके साथ, ईच फैक्टर का वेटेज आप दे रहे हैं 8 लॉट, तो 8 into 8 64 लॉट्स. इट विल बी अ गुड रिस्क मैनेजमेंट. तो फैक्टर के जरिए डिफरेंट तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं. सो ओवरऑल आई रिमेन बुलिश. कैसे बुलिश रहूंगा? वाया लेवरेज फंड्स, फ्यूचर्स, ईटीएफ्स. इंडिया से फ्यूचर अलाउड नहीं है, बट लेवरेज फंड कर सकते हैं S&P 500 में. सो लेवरेज फंड के हिसाब से हमें बुलिश रहना चाहिए इन S&P 500. नेक्स्ट हम लोग जो इंडेक्स को देखेंगे दैट इज डाउ जोन्स. कल रात को मेरा अलर्ट आया था बिकॉज इट वाज क्रॉसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड इट इज बुलिश. ये जो फ्लैट लाइन है इसके ऊपर व्हाइट क्रॉस और मिनिमम स्टॉप लॉस लेवल सस्टेन कर रहा है. दैट मींस बुल्स आर स्टिल स्ट्रांग नेचुरली, क्योंकि 57% इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्टेड दिखा रहा है बाई का. बाई का प्रोजेक्टेड विन प्रोबेबिलिटी इज शोइंग अराउंड 57%. Now after Dow we are going to take a look at Nasdaq. Nasdaq is also bullish. लगातार बुलिशनेस चल रहा है. दैट मींस एट सम पॉइंट वी आर लाइकली टू गेट सम करेक्शन. Nasdaq ये व्हाइट क्रॉस अभी भी मेजर जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया है. दैट इज बुल्स कैन स्ट्रगल अ बिट बट स्टेडी बुलिशनेस दिखा है नेचुरल गैस में. जिस दिन से करेक्शन चालू हुआ है उसी दिन से स्टेडी बेसिस पे बाई होते गए. Once again a comeback of US tech indices. Now after Nasdaq we are going to take a look at the Russell. Russell is also coming back in strength. Russell थोड़ा स्ट्रगल किया था, कल रात को इसका स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है एंड ये अभी सस्टेन कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल जो है 22145 इसके ऊपर. तो Russell can show further bullishness and move higher to touch the 2259 area. So Russell में भी हम लोग बाई कर सकते हैं. Russell बाई करने के लिए हमें बाई करना होगा UWM. This is gives us exposure to Russell. This is one of the example. और भी एसेट्स है जिसके जरिए हम लोग Russell पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. Now, investing in indices is much safer than going into the stocks because the underlying volatility is low. Obviously, you won't gain as big as stocks, but you won't also lose as big as what you can lose in stock. And हमें profitable trader बनने के लिए we need consistent return rather than aggressive, excessive return. So now we have taken a quick look at the US indices. Now we are going to take a look at the volatility. Volatility आज थोड़ा बढ़ रहा है. That means we can see some early correction. Volatility goes negative to the market का bullish movement. Volatility has been moving lower steadily, just in line with the market rise. We got a bearish signal. That means it can decline further. Further decline in volatility is very, very possible. Now,
after volatility, what we are going to take a look at individual European indices. यूरोपियन इंडिसेस में पहले देख रहे हैं नेदरलैंड्स को, जहां पे बाइंग कमबैक हो रहा है. ये रहा, बाइंग चालू हुआ है, बाइंग सिग्नल आया है. आई विल हाइड द लोअर टेबल ताकि आप सारा सिग्नल देख पाए. We can bring switch on and switch off this table. So here we have a buy signal. It is moving higher. Further rise possible, but major resistances on the way. So strong breakouts चाहिए. This is Italy. We had a buy signal. मेरा buy signal आया था इटली में. It can go further up, but still not like US, not in a buy phase. Major बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी भी कम है, तो हम लोग छोटा पोजीशन आइदर लेंगे या बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो यूरोप पे ओवरऑल फोकस नहीं करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है. सो आईबेक्स 35 एवरीवेयर जो दिख रहा है, इट इज ब्रॉड बेस कमबैक हो रहा है इक्विटीज में, जैसे ब्रॉड बेस सेलिंग हुआ था. अब दिस इज फ्रांस का इंडेक्स. बाकी अपॉर्चुनिटीज के देखते हुए I'll prefer not to go too much into France. France has been much bigger decline इसने face किया because of the turmoil, political turmoil over there. Now, though I have a buy signal, इस तरह आपको sort out करना पड़ेगा which one feels better in terms of definite number one consideration is risk. Risk के हिसाब से कौन सा trade is looking better. Sorry, I'll share again. So ये रहा ओवरऑल यूरोपियन ब्लू चिप. इसमें भी लगातार बाइंग चलते आ रहा है सिंस 7th of August एंड बाई सिग्नल आया 15 एंड 15 से स्टेडीली 15th हमारा मार्केट बंद था, बट ये बाहर का मार्केट वाज ओपन. यू कुड हैव ट्रेडेड स्टेइंग फ्रॉम इंडिया. Now everything is not trading out. Staying in India is possible, like currency trading from India, or any kind of margin trading, futures trading. These are completely banned. I will never ever recommend doing such things. So this is the German 30 index. This is also European broadly comeback. Let's quick look at Asia. Asia में देख रहे हैं हमारे Nifty 500 को strong broad based comeback. बढ़िया बेस फॉर्मेशन के बाद, but the candle is going up in both the sides. दोनों साइड बढ़ रहा है कैंडल. That means we can see both side volatility. But Nifty 500 देख के लग रहा है it is going to go up further. So equity market once again has come back to the bullish phase in India. Next we are looking at Sensex is similar to Nifty 500. This is Vietnam index. हम लोग इसमें comeback देखे थे when last time. About to see comeback, खास नहीं. Now this is has once again it's as I say broad based equity market comeback. हर जगह buying दिख रहा है. South Korea similar buying and it can go even bigger क्योंकि important level जो है वो break कर चुका है. Maybe all इसका break नहीं होगा possibly, but it will still can go up to 69. This is EWI, the representative of South Korea. ये South Korea का exchange traded fund. न्यूजीलैंड का rather is a bad time. न्यूजीलैंड में जो buying हम लोग देखे थे, हमें square off करना पड़ेगा. Square off करना पड़ेगा. More importantly, this cannot be reduction. और reduction भी करेंगे तो large quantity 70-80% of the position reduction कर देंगे. Because it has been bullish broad-based market in that New Zealand is suffering, number one. Second, this bullish breakout is turning false. False breakouts sometimes go in the opposite direction and becomes the right breakdown. So we have to consider this risk as the bullishness is not successful. Price action में दिख रहा है exit for the last 2 days, short-term momentum bearish. With such a scenario, we will completely exit and we will place the alert. The price action bullish. Once the price action bullish, then only we'll take a look at New Zealand. Let's look at Australia.
it's broadly bullish, but range better opportunities hai rather than going into Australia. Let's look at Japan. Japan का Nikkei index sharp sell off के बाद buying हुआ है, beautifully buying चलते जा रहा है in Nikkei में, and I think it will go up further, and major fight जो होगा that will whether ये जो bull है Nikkei का ये 40,000 break कर पाएगा या नहीं. If it can break higher, then we'll go even bigger. But main यहाँ पे fight होने वाला है Nikkei का. It can break higher, mainly ये जो slanting zone है, अगर यहाँ से breakout हो रहा है, if it breaks from this area, it can go very big. Maybe new all-time high में पहुंच जाएगा Nikkei 225, because though we are in a recessionary cycle, I have said this many a time, we are in a recessionary cycle. First phase is always very bullish. Second phase is the crash. Now we are almost nearing the second phase. We are not there yet. And usually before the second phase, we should have, it's better to have last one mega rally, last one good rally, so that last of the jo retail hai, everyone gets very bullish, and from there we see the turnaround. So as per that, yeah, we should some bullishness, and also we should see some bullishness in crude oil. Crude oil has not been bullish. Crude oil may be bullishness expected in the last leg of the phase. So Japan, this is Nikkei 225 is turned bullish. So I'll prefer to remain bullish in majority of the equity. Equities are the ones that making money. This is looks like after the initial buying, this is I'm long into China via exchange traded fund. And with this candle going lower, this is the first sign that first momentum loss. This is the first sign to consider to do risk management or not. This is not a definite exit because price action, we don't have a red cap like this one. But I have to consider when other equities are doing well, how much quantity is currently my quantity is low, so I don't mind holding it to see if really things turns bad again for China, then I'll have to exit my long positions and again wait and look for other better opportunities where jahan pe ho raha hai. So like Nikkei, I can once again add more position on a Nikkei. So overall मुझे जो दिख के लग रहा है कि if I even take a look at कि global stock market का ETF or a representative of overall global stock market, the bulls have come back after the major correction. यहाँ से जो around 7 to 8 August से जो bullish comeback चालू हुआ है, it has continued on a steady, steadfast pace. So that's all, friends. Thank you for watching my video. All the best from my side for your trading. And as always, happy trading.